Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to start unit number 8, Introduction to Windows 10. This is our first part of this chapter, and in this chapter we will discuss about the new things in Windows 10, what are the drawbacks in the previous Windows systems, and what are the facilities provided by Microsoft in this Windows 10. Now, firstly, we have to learn about the Windows 10. It is the Microsoft operating system for personal computer and tablets. The main design has been to bridge the gap between computers and tablet. जो फैसिलिटीज़ आपको प्रीवियसली आपके टैबलेट्स में स्मार्ट फोन्स में प्रोवाइड थी, वो अब आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स पे भी इजीली प्रोवाइड हो सकेंगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ अ 2-in-1 डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली स्विचेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड टैबलेट मोड व्हेनेवर अ कीबोर्ड इज़ अटैच्ड और अनअटैच्ड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट. अगर आपके सिस्टम के साथ कीबोर्ड अटैच है तो ये कंप्यूटर मोड में उसका काम करेगा, और अगर सिस्टम के साथ कीबोर्ड अटैच नहीं है तो ये टैबलेट मोड में, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये उस तरह काम करेगा. आपकी विंडोज़ 10 जो है आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे टैबलेट मोड में एक्टिवेट हो जाएगी. दिस न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम corrects the many mistakes in Windows 8, and by taking the best parts, features and providing the very vast improvement in nearly every respect. This has provided a dramatic change seen in recent editions and replaces it with the small and more powerful things on Android and the smartphones and the tablets. Windows 10 is a fast, well-featured and functionally operating system that is equal at home on tablets or smartphones as it is on desktop computers. डिपेंडिंग ये आपको जो फीचर्स टैबलेट मोड और के प्रोवाइड किए गए हैं, इसकी वजह से आपकी बहुत फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी आपके सिस्टम्स की. अभी हमारे पास एक मेन जो है फ्रंट व्यू है हमारे पास विंडोज़ 10 का, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट जो लेबलिंग हुई हुई है. स्टार्ट बटन है, आपके पास नोटिफिकेशन एरिया है, टास्क बार है. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आपके पास टाइल्स होती हैं टैबलेट्स में, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन में टाइल्स प्रोवाइड की गई हैं. आप जैसे आप करते हैं स्क्रीन्स, डिफरेंट स्क्रीन्स बनाई हुई होती हैं, आपने टाइल्स बनाई हुई होती हैं मोबाइल स्क्रीन्स पे. कुछ आपकी स्क्रीन्स पे कोई और एप्लीकेशंस होती हैं, दूसरी आपकी टाइल पे कुछ और एप्लीकेशंस एडेड होती हैं. बिल्कुल यही चीज़ अब आपको विंडोज़ 10 में आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पे नज़र आएगी. और देयर इज़ ऑल्सो अ लाइव टाइल, जो आपके जैसे मोबाइल्स पे वेदर अपडेट होता रहता है, वो आपको डिटेल बताई जाती रहती है कि कहाँ क्या लोकेशन पे इस वक्त आप हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. ये चीज़ें आपको सारी अब विंडोज़ 10 पे फैसिलिटीज़ ईजीली प्रोवाइड होंगी. Now, what's new in Windows 10? The very first is the Start menu. It shows a bit of metro screens functionality by making it possible to have live tiles. अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास लाइव टाइल्स, जैसे मोबाइल्स में आपको लाइव हर चीज़ अपडेट हो रही होती है, इंटरनेट कनेक्शन आपका हुआ होता है, तो आपको आपकी लोकेशन बताई जाती है, आपका वेदर टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ आपको इन्फॉर्म की जा रही होती है. अब आपके पास लाइव टाइल्स भी ईजीली अवेलेबल होगा. Rearranged metro apps. In this functionality, we can resize, move and have a toolbar of options. हम टाइल्स को अपने अकॉर्डिंगली साइज़ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्क्रीन्स के साथ एक दूसरी स्क्रीन में हम स्विच ऑन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द एज ब्राउज़र. जैसे कि आपको विंडोज़ 8 में आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर एक इंटरनेट ब्राउज़र होता था, अब उसको विंडोज़ 10 में रिप्लेस कर दिया गया एज ब्राउज़र के नाम से, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड इन ब्राउजिंग द इंटरनेट. नेक्स्ट एक्शन सेंटर. एक्शन सेंटर जैसे आपकी विंडोज़ 8 में जो नोटिफिकेशन एरिया था, जहाँ पे आपको आपके सिस्टम की सेटिंग्स, वॉल्यूम चेंजेस वगैरह बताई जा रही होती थी, अब उसको नोटिफिकेशन एरिया को एक्शन सेंटर से प्लेस कर दिया गया है इन विंडोज़ 10. प्रोवाइड द कंट्रोल्स फॉर कॉमन फंक्शन सच एज एक्टिवेटिंग ब्लूटूथ एंड टैबलेट मोड. मोड्स आपको पता चल जाएंगे आप कौन से मोड में इस वक्त काम करें, आपकी ब्लूटूथ की एक्टिवेशन हुई इस वक्त पॉसिबल है या नहीं है. नेक्स्ट इज़ द यूनिवर्सल ऐप. इट इज़ अ बंच ऑफ apps including photos, videos, music apps, people, mail, calendar will look and feel the same across different devices and screen sizes. Their data will also be saved and synchronized automatically. ठीक है, जैसे आपकी मुख्तलिफ जो ऐप्स आप क्लिक करते हैं जब अपने मोबाइल पे, तो आपको डिफरेंट ऐप्स नज़र आती हैं, कैलेंडर की, कैलकुलेटर की
اینڈ فوٹوز، گیلری، میوزک، یہ ساری ایپس اب آپ کو آپ کی اسکرین پہ، فرنٹ اسکرین پہ ٹائلس کی صورت میں آپ کو اویلیبل ہوں گی. یہ ساری چیزیں انجوائے کرنے کے لیے یو مسٹ ہیو اے ونڈو 10، اور اس کے لیے آپ کی کچھ سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ بہت اسینشیل چیز ہیں ٹو انسٹال ونڈو 10. فرسٹ از دا پروسیسر اور 1 گیگا ہرٹ اور فاسٹر. آپ کے پروسیسر کی اسپیڈ 1 گیگا ہرٹ سے منیمم 1 گیگا ہرٹس ہونی چاہیے. اس سے کم ہوگا تو آپ کی ونڈوز 10 اس پہ نہیں انسٹال ہو ہوں گی. میموری میں ریم کا سائز جو اگر آپ کا 32 بٹ پروسیسر ہے تو 1 GB میموری ہونی چاہیے، اور اگر آپ کا 64 بٹ پروسیسر ہے تو 2 GB آپ کی میموری سائز ہونا چاہیے. ڈسک اسپیس کیا ہوگی آپ کی 32 بٹ کے لیے 16 GB ہوگی، اینڈ فار 20 GB آپ کی 64 بٹ کمپیوٹر کے لیے ہوگی. نیکسٹ دا گرافکس ود جس مائکروسافٹ ڈائریکس ود WDDM ڈرائیور. WDDM از دا ونڈوز ڈسپلے ڈرائیور ماڈل، اور آپ کے گرافکس کے لیے آپ کو مائکروسافٹ ڈائریکٹ ایکس یہ والا ڈرائیور انسٹال کرنا پڑے گا بیکاز اٹ پرووائڈ دا امپروو گرافک پرفارمنس. اینڈ آپ کی ڈسپلے اسکرین ریزولوشن 800x600 ہونی چاہیے آپ کی اسکرین کی ڈسپلے ریزولوشن. یہ ساری آپ کی سسٹم ریکوائرمنٹ ہیں. یہ جب تک آپ کی فلفل نہیں ہوں گی آپ اپنے سسٹم پہ ونڈوز 10 کو انسٹال نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی، آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ تھوڑی سی اس کی جو بگننگ چیزیں ہیں ونڈوز 10 کی یہ انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوں گی. اس سے ریلیٹڈ آپ نے کویشچنس کو رائٹ کرنا ہے اپنی نوٹ بکس پہ، اینڈ اس کو لرننگ اچھی طریقے سے کرنی ہے. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم یہیں سے ونڈوز 10 کو کنٹینیو کریں گے، اور اس میں اور فیچرز جو ایڈ ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو اسٹوڈینٹس.